A wave of protest is sweeping across Pakistan-occupied Kashmir or POK. Denied basic amenities and rights, Kashmiris are stepping up their protests to demand complete independence from Pakistani yoke. Nationalist leaders say Kashmiris have had enough and nothing will stop them from fighting for the freedom of their homeland. POK was a part of the erstwhile princely state of Jammu and Kashmir. In October 1947, Pakistan Army in the guise of tribals invaded a part of the Jammu and Kashmir and has ever since maintained a stranglehold on the region. The occupied region has a puppet government and a legislative assembly. These were created to showcase a semblance of democracy to the world. Many said the Pakistani army and its secret services have created political parties to further Islamabad's interest in the Himalayan region. ये सिकंदर याद साहब हुए, अतीक साहब हुए, उनके वालिद मोहतरम सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब हुए, ये हमेशा कामयाब रहे हैं। कभी फ़ौज की छतरी में इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन जीता है, कभी मुस्लिम लीग की छतरी के नीचे इन्होंने इंतखाबात जीते हैं और आवाम का ये भरपूर इस्तेसाल जो है ना जी उन्होंने किया। और मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर के नाम पे गुज़श्ता 63 सालों से जो है ना जी वो आवाम का इस्तेसाल कर रही है, कश्मीरी आवाम का इस्तेसाल कर रही है। It is not only the people of Pakistan-occupied Kashmir, but Kashmiris in Gilgit-Baltistan are also suppressed by the Pakistani establishment, a nationalist leader said. आज भी इक़्तिदार अवाम के पास नहीं है, न गिलगित-बल्तिस्तान में है, न इस्लाम ने आज़ाद कश्मीर में है और न ही कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले किसी खिता में है। इक़्तिदार हुक्मरान तबक़ात के पास है जो साम्राज्य के एजेंट हैं। Pakistan has stationed large contingents of its army in the Himalayan region, making it one of the most militarized zones in the world. Wajahat Hassan, who belongs to the erstwhile ruling family of Gilgit, was picked up by the security forces and tortured for days in an illegal detention center. मेरे ऊपर, मेरे खानदान पर, मेरे भाइयों पर, मेरे बच्चों पर इतना शदीद तरीन किस्म का दबाव है। राइट एट दिस मोमेंट आल्सो कि बात दफा सोचते हैं कि खुदा न खास्ता बात साहब ने कोई गलती तो नहीं कर रहे और ये सब कुछ हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है। Pakistan has plundered the region's rich natural resources without paying any royalty. This has also affected the livelihood of the locals. Apart from the suppression of political rights, the rulers have not done anything to improve the social infrastructure of the remote region. The exploitation and lack of economic opportunities have pushed about 3/4 of the population below poverty line. All this is fueling widespread anger against Pakistan and its puppet regime.